आ चुका है वक्त गोजो का लाइन आउट करने का। तो फिर वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आज ये ब्रश के फाइन लाइनर यूज करने वाला हूँ, इसका रिव्यू भी देने वाला हूँ। तो फिर विदाउट देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाला हूँ, पहले इसको लाइट कर लूंगा आउटलाइन को विद माय नीडेबल इरेजर। भाई जल्दी हो जाएगा। ये भाई मैं इसको लाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा और लाइट। भाई नीडेबल इरेजर से भाई मेरे को दिक्कत आ रहा है भाई लाइट करने के लिए। ना लाइट तो सही होगा, बाद में ऐसा करूँगा मैं मिटा भी दूंगा, इरेजर से रब भी कर दूंगा इसको। और आप वीडियो को एंड में देखिए, एंड तक देखिए। और मैं बीच में मतलब वीडियो के एंड में मैं इसका रिव्यू भी करूंगा, ये ब्रश का फाइन लाइनर का रिव्यू भी करूंगा। तो भाई एंड तक बने रहिए, मतलब पूरा वीडियो देखिए। और मैं कुछ टिप्स भी दूंगा ये ब्रश और फाइन लाइनर्स के लिए। और फिर ये भाई हो गया हमारा मतलब थोड़ा सा कंप्लीट है। और एट लास्ट अभी ट्री में कर देना है, मतलब लाइट कर देना है। नाउ इट्स द टाइम टू यूज माय ब्रश और फाइन लाइनर। तो चेक आउट दिस, एंजॉय दिस। तो भाई मैं पहले यूज करूंगा, मैं मोस्टली ना मतलब फाइन लाइनर्स को मतलब मैं अभी यहाँ पे ये ब्रशों का जो फाइन लाइनर है इसमें 8 मतलब क्या बोलते हैं 8 पेन्स आता है, 8 फाइन लाइनर्स आते हैं। तो भाई मैं पहले यूज़ करूँगा अभी क्या यूज़ करूँ, ये 0.2 यूज़ करूँगा अभी। ये गोजो का मतलब क्या बोलते हैं ये जॉ लाइन बनाने के लिए। और कुछ जगह में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी जगह में मैं कौन कौन सा मतलब फाइन लाइनर यूज़ किया हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लाइन आर्ट। तो भाई मैं ये जॉ लाइन में इसका ये 0.2 मतलब 0.2 यूज़ करूँगा। क्या बोलते हैं 0.2 mm है ना, नहीं रुको 0.2 mm यूज़ करूँगा मैं इसके मतलब जॉ लाइन में ड्राइंग करने के लिए, मतलब जॉ लाइन को लाइन आर्ट करने के लिए। और ये बजट फ्रेंडली भी है ये फाइन लाइन आर्ट। और मैं ये फाइन लाइन आर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। भाई ये 0.2 थोड़ा सा मोटा लग रहा है, थोड़ा सा अभी 0.1 यूज़ करूँगा मैं इसके यहाँ पे यूज़ करने के लिए 0.1 यूज़ करूँ। तो हो चुका है हमारा ये गोजो का जॉ लाइन। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे गोजो का चश्मा। चश्मे में मैं यूज़ करूँगा 0.05 फाइन लाइनर लाइन आर्ट करने के लिए। तो फिर ये यहाँ पे ये हम लोग गॉगल्स में करेंगे, गोजो के गॉगल्स में करेंगे। भाई जब तक मैं ड्राइंग कर रहा हूँ आप इंजॉय करिए गाना। तो फिर मैं टैब बजाता हूँ, इंजॉय द सॉन्ग। अभी मैं ये गोजो का जो आप उसमें आप जो गाने आ जाते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
फाइन लाइनर, उससे आपका ड्राइंग कार्टूनिश लगेगा। अगर आप लाइन आर्ट करोगे फायर वगैरह वगैरह में, फायर पावर में, उसमें आपका मतलब कार्टूनिश लगेगा आपका ड्राइंग। एनिमे टाइप रियलिस्टिक टाइप नहीं लगेगा, मतलब कार्टूनिश लगेगा, ठीक है। एनिमे और कार्टून में अलग है, तो कार्टूनिश लगेगा, वही मान लीजिएगा। तो मैं उसके हाथ में यूज कर रहा हूँ 0.02 mm का फाइन लाइनर। और मैं एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, जब भी आप लाइन आर्ट करोगे, लाइन आर्ट जब भी करोगे आप एक मतलब ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, आप ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, इससे मतलब ऐसे ऐसे मत लाइन कीजिएगा, ऐसे ऐसे लाइन आर्ट मत कीजिएगा। आप सिंपली ऐसे सीधा ये ऐसे मतलब लाइन खींचिएगा, जिससे आपका मतलब ड्राइंग भी अच्छा बनेगा। ऐसे सीधा ऐसे लाइन खींचना है, ये आपको धीरे धीरे ऐसे करके नहीं करना है, इससे आपका ये खराब भी हो सकता है ड्राइंग। तो आपको सिर्फ सीधा स्लैंटिंग में एक साथ ऐसे करना है, एक साथ आपको ऐसे करना है मतलब। तो फिर अभी हम लोग मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब आप जब भी लाइन आर्ट करोगे आपको ऐसे 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 करके नहीं करना, ठीक है। मतलब एक साथ आपको एक साथ करना है, मतलब जो भी लाइन खींचोगे आपको ऐसे कंटिन्यूअसली करना है बिना छोड़े। अगर आप ऐसे 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 करूँगा छोड़ छोड़ के, फिर आपका ड्राइंग खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं इसके हैंड्स को। हाँ, उसके हैंड्स को हम लोग ड्रॉ मतलब लाइन आर्ट करेंगे। तो फिर चलो लाइन आर्ट करते हैं उसके हाथ को। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And कपड़े में ज्यादा डेप्थ होगा इसका। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on यहाँ पे ये वाला ट्री में करने के लिए भूल गया हूँ मैं, थोड़ा सा भुलक्कड़ हो गई मैं, मतलब भुलक्कड़ तो नहीं हो गई बट भूल गया, कभी कभी तो इंसानों से भी गलती हो जाती है ना। भाई 1 मिनट भाई, मेरा ट्री का अभी हुआ, मेरा ट्रीज का हुआ नहीं है, थोड़ा सा रुकिए, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप सिनेमैटिक शॉट देखिएगा। हो गया। अभी ट्री के बुशेस में थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे देना पड़ेगा तभी बुशेस जैसा लगेगा। तो भाई हमारा हो चुका है, अभी आप लोग सिनेमैटिक शॉट देख सकते हो। तो भाई अगर आप वीडियो में अभी ये देख रहे हो, अभी आप लोग वीडियो के अंतिम मतलब लास्ट में आ चुके हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। शेयर भी करना है, जरूरी है शेयर करना, और ऐसे नए नए कंटेंट देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और भाई मैं कितने बार बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब, पता नहीं भाई। तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, आप लोग तो अच्छा हो ना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। और सब्सक्राइब का मेन एम तो मैंने पहले ही बोल दिया, कितना एम चाहिए सब्सक्राइबर्स मुझे वो पहले बोल दिया। तो भाई हो चुका है। और हमारे ये मैं बोल रहा था ना आपको कि इसका रिव्यू दूंगा। तो भाई ये ब्रश रो फाइन लाइनर एकदम अच्छे फाइन लाइनर है, आपने देखा ना कितना अच्छा ड्राइंग बनता है इससे, और भाई अच्छा भी दिखता है, और ये अफोर्डेबल प्राइस में भी है। और ये ब्रश रो फाइन लाइनर्स जो है आप लोग अमेजोन से परचेज कर सकते हो। तो भाई मैं आपको ये भेज दूंगा, इसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग बाय कर लीजिएगा। और वैसे ये मेरा है 8 पीसेस का, इसका टोटल 6 मतलब 8 पीसेस, इसका 6 पीसेस भी मिलते हैं, बट मैंने खरीदा 8 पीसेस का। और मैं जो नीडेबल इरेजर भी यूज किया हूँ, इस जो भी मतलब मैं चीज यूज किया ना इस ड्राइंग में जो भी यूज किया मतलब अभी जो भी यूज किया फाइन लाइनर नीडेबल इरेजर, वो सबको आपका मतलब आपको मैं मतलब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो भाई बाय बाय।